can now get north of the river because everybody's looking for it. Just about gets over the rock. Yeah, it's a criminal rotate you have to make anyway over towards the north side now, with so many players taking precedent on that area of the map. There's not going to be a huge amount of positions available for teams. We've seen already plenty of squads rotating over this very same bridge. So there is tons of teams already over towards this western side and east side of the map. You see even a couple of teams actually down towards that south side. That is an unbelievably lucky res. Wait, Insidio are coming back. They turned around. They were like, oh, and there's actually so much going on over there. Let's finish off this fight. Insidio. Goodness me. They give them the old one switcheroo and knock over towards their backline, but they'll pick that up. That's got to be. They didn't get the notification that Lily had been eliminated. I think that's fair enough to make the turnaround because they know that he was out in open space. Therefore, a wrap back actually was the best decision they could have made for 3 eliminations, essentially. It's a smart play from Insidio. It does somewhat cut out their rotates forward, but with the circle still having a little bit of ground down towards that south side, they can certainly play over towards the western edge of Yasna and then plot their course through into the next circle. I don't think they can make any break for center just yet. I think they'll have to wait for teams to be moving out from those positions that sit around the edges of the bridges. That is going to be the opening they're looking for, but I don't know how likely it is to present itself. Next circle popping in soon, and then Cilio very likely to be cut out here. IWNRX, they've left a player, at least Swain, on that south side. I think there may be, yeah, they've got two of IWNRX on the south side in Rostock, but they've got that foothold that Incilio just doesn't have right now. The circle pops, does keep a little bit of that south side in, but we're definitely going up north of it, so teams are going to have to make their way across. And by teams, I'm talking about Incilio. It's a pretty evil position on the map to play as well. I don't think a lot of teams like playing around this area purely because over towards that eastern side, you just have a lot of that. Right now, you got Team Queso rotating over the back of Tiamba. Fury is still sat on the back side of it over towards Yas Lake. Tiamba, though, currently just rotating around trying to spot out all that they can because this is an area where you can hide a bit. Be able to pick up the garage, essentially. This is not a bad position to play whatsoever for them. It is a little bit lacking in terms of that high ground presence, so they will have to be careful. And it's also a compound that is susceptible to crashes. I've seen a fair few times in the past, people just absolutely mess up the hold on this position, allowing teams to get shots from underneath the little gaps that are on the walls. So I'm hoping this doesn't happen for Tiamba here. Furia trying to keep the heads down there. But the spray downs from Getzo Roy from Tiamba across the way. But Tiamba finds one, nearly getting the knock, but up the hill is a little bit more successful over towards Kajowski. So yeah, shot coming through from Nick McGalaxy actually takes down Kajowski, and Navallo will get the flush on that as well, so it won't be picked up by anyone from Tiamba there. But Fury is backed off because of that. Back down towards this compound on the east side, so they don't find too much success of finding some kind of breakout point to fight into the circle. Nick McGalaxy though return fire onto QZZ him as well, so Tiamba now down to 3 players. Getting a very aggressive hold from Tiamba, one that I don't particularly think is super necessary. I think as soon as you start fighting 2 separate teams, is where you fold back into one another, maybe try and play that roadside. And with how far QZZ was out on that western edge, this was just not a split that I expected from them. I mean, the hill that sits in that curve of the river, just to the east of Rostock, up north side of that river, right now, side of that hill is really, really powerful. You've also got Getzo Roy and their big plateau area out to the west a little bit further, who are able to do a lot of damage control and rotational control as well to the southwest. So in general, this south side, I think, is looking fairly safe to try and pressure out these teams on that edge. That's what Tiamba felt just then. Taking those shots from Nick McGalaxy, who've had such an influence over the teams to their east, it's going to make it really hard to move away from that position for them. I question what they're going to do when they have the next circle pop, but it looks like they can just stay stuck to the ground here. I think the Galaxy may be on for a good game. Same story for Getzo Roy.
Enigma Galaxy suffered a lot with this reshuffle of the roster. Weren't quite able to make it work for a while, and I think they're slowly finding their way now throughout the year, which is nice to see in terms of the teamwork that's coming through. Alter Ego trying to wrap over towards Team Queso. The off angle is not working out at all, and with that, it is 2 players from Alter Ego going down, and there's a pretty lukewarm amount of help coming through from Roseberry up on high. Alter Ego. I mean, he's trying to cut out that approach, but the nades can come through and sort of force this flush to happen. There's no way that Rosemary can crash into this one. The last player alive for Alter Ego, you don't want to risk going out here. 6 of them, though, still. You noted that. Successful game. Ralph into Furia, and the backup to come through from Redox now as turning the corner. Furia try and get one. It'll be successful for the first, but through the window, there is a response. Immediately going for the flush. Worried about the wraparound, and immediately Redox shots over the bottom. Ink Jamba scouting this one out, turning around, not going to crush fully. This is a brilliant approach for Enigma Galaxy. Yeah, again, it's that initial hold that was so important to allow the rest of Enigma Galaxy to come in for the assist. If that wasn't the case, that would have been a very different story. Cilio finding Zed Wolf. They had spent a lot of time down towards the south side and Rozog looting, only for them to head over towards the northern edge and already lose out Zed Wolf. And now down to 3 players, and one of those players is extremely low on their side. Virtus Pro looking to crunch out Falcon's Force. If you're playing on that northern edge, they do have the high ground right now, and are looking for some kind of opening versus Virtus Pro. Cilio, a ground floor approach towards the dropout shot from Kine. The backup from the top row, but in comes Enigma Galaxy, moving down south. They flexed out towards the north side, took down Furia, and now it's the turn of IWNRX to feel the brunt of the force from Enigma Galaxy's descent from that north side. We'll see if they're able to flush that one out, because Falcons are fighting to hold out Virtus Pro on this northwestern edge. The nades come in from Enigma Galaxy, frozen on the top side of the tower here, but there are so many threats. And out the window for a second drop shot? I don't think so. 7 elims now for Enigma Galaxy. Yeah, great cleanup from Enigma Galaxy around the map. They are very aware of what is going on so far. Frozen probably throws the nade of the day there, though, out of the window, getting the double knock, or essentially hits the other player for basically 10% life. Very, very well placed there. And kind of saves the day. That is it up until Enigma Galaxy coming to ruin it. Falcons Force, though, finding Malloy. 3 eliminations for them and doing a great job as 60 has to send away. Yeah, some third-party shots as well coming through from IHC on the south side of that fight. That's a pretty big nade as well coming through from IQ there. For ASI8, they've been down on their luck for a while now, but one more player to hold, and it works. A 3-person hold, and TJB cannot get rid of him. IQ has always been, true to his name really, he's a very smart player, and he knows what needs to be done in those moments. Versus TJB, a 1v3 essentially, that's light work for him. It's light work. Nice and easy done. The south circle pop as well keeps Enigma Galaxy's position inside the circle. Gets O'Roy again happy about this position on the south side, this plateau that they have control over right now. Looking pretty healthy, looking pretty good to maybe take this one down. Enigma Galaxy, I think that's true. They didn't do well on Sandhawk, but this is a different map, and they are slap bang in the middle. These are so many good points you're making, Blank, but consider the alternative. Big game. Yeah, it depends. They got only got a little bit more time to do it. I mean, they'd be pretty happy with 10 points on the chicken dinner. But I think to get to Royce, the question for me is, what's the utility looking like? What's the weaponry looking like? How's the ammo? They've been very hesitant to really find any kind of success around the map so far in terms of influence. Enigma Galaxy basically hired out as a security squad for them on this southeast side and is raking home the hourly pay. 17. There it is. There's one. Oh. IQ trying to get across here, but there's one player from Team Queso in the way. They will be aware of each other's presence now. The vehicles making that noise, and IQ actually looks like he wants to fight. Both of them hopping out. A little bit of a call.
points that they managed to snaffle away there. 2 of them went to Nick Galaxy at least, but that is the end of them. There's a nice little wraparound comes through from FaZe. A third-party approach to this map for Nick Galaxy is working wonders for their points tallies, but FaZe now have open cannons to Ralph, who drops short out of the vehicle. Ralph a little bit far behind here. I think at this point in time, you have to regroup quite quickly. Stoic's all the way down towards that south side, just checking out the shack, what's going on down there. Circle heads back up towards the north. There is maybe a world in which Stoic's can pick Ralph up, but Narvalo and Redox. This is desperate from FaZe as well. They're so focused on not allowing Ralph to get back up again. Again, it's a tough rotate that they have to make towards that north side. A bit of an awkward scout out coming through from Redox on that front line, and Mela is able to find him. Mela, who has always been one of my favorite players here coming in from FaZe, just incredible in those close quarters. Redox flushed, and now the nades from the backline for Nick Galaxy looking to go up to double digits. I mean, they saw IWNRX do it. They said, "You can, what anything you can do, we can do better." They're looking for more on this match, but for now, FaZe proving too tough of a challenge, too bitter a pill to swallow. Now follow Stoics, as well as Ralph still up in action. A slight mistake there, I would say, from Redox on that front line. I think the slow roll up into the smoke. I think the reasoning behind it is just because they've been given so much time to get Cryo over towards this front line. Realistically, all Nick Galaxy had done was have Redox and Narvalo send in a bunch of nades, but with the direction they're coming in, bouncing down the hill, not a lot of success came off the back of them. So again, FaZe just had so much time to get up towards that front line, use those smokes to get into a position where maybe Nick Galaxy didn't expect. I think that's what you have to respect as Nick Galaxy, is that you didn't have all the information on that fight because you went for that pickup onto Ralph, in which case I think they should have backed off back down towards that south side. Stoics had already read that information, that it was free, it was clear, and that was an opportunity for them that they just didn't take. IHC, previous PMGC champions off the back of a heavy elimination focused performance. See if they can draw on that past strength. East gets naded out, and that's a great start to demo. Immediately puts the second one down. But the nade goes long, and one short as well, leaves him still up and in action. Over towards, but gets it. Roy do have massive oversight. Look at the buildings that they control. The damning presence from that north side of this fight is just so difficult to deal with. Icy continues to launch these nades over. He's not really finding anything to chew on. Yeah, it's a hard nade to hit. And another one is absolutely on target there as Falcons Force are getting ripped to shreds. It has been a hard game for Falcons Force. I don't think they've had an easy push into this one. The fact they're able to get up towards the top 5 is pretty darn good work. From Basani, IHC की साइड से जी हाँ, बासानी इनकी तरफ से पॉइंट निकाला जरूर किया है, और वहीं पर आप देखें, आप कुछ यूटिल टर्म करने की कोशिश में भी ये प्लेयर हमें दिखाई दे जरूर रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर टीम रॉय के प्लेयर दिखाई देंगे। रॉय अपने चारों प्लेयर्स के साथ मौजूद है। आदि मुझे यहाँ पर इनकी जो कह सकते हैं बॉडी लैंग्वेज है वो ठीक नहीं लगी। मुझे लग रहा है कि टीम रॉय इज गोना बी दैट टीम जो कि इस वक्त तक कहते बनाएगी पूरी लॉबी के ऊपर, लेकिन रॉय के प्लेयर कुछ ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। सामने एक लिमिटेड एरिया के ऊपर, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के ऊपर, जोन के बाहर IHC के प्लेयर्स मौजूद हैं, which clearly tells कि IHC के ऊपर दिक्कतें यहाँ पर बनने वाली हैं। लेकिन क्या यहाँ पर यूटोस का इस्तेमाल पर किया जाता है? क्या ग्रेनेड्स जो कि यहाँ पर दाखिल आएंगे वो को एलिमिनेशन पॉइंट निकालने में मदद करेंगे भी या नहीं, ये के लिए इंतजार जारी है। और ये बहुत टाइम से इंतजार वेट कर रहे हैं कि दोनों साइड में से कोई टीम गलती करे। IHC are still outside the zone and Roy is still gatekeeping them, लेकिन रॉय उनकी तवज्जो IHC पे क्यों नहीं है? Why are they not looking towards IHC? उनको तो चारों प्लेयर्स को देखना चाहिए। देखो that team is outside the zone। सारे के सारे एलिमिनेशन 0 के 100% एंड 0 फिलहाल के लिए
थोड़ा आई थिंक सो स्काउट कर रहे हैं अभी के लिए इतराफ में रहती टीमों को, एंड एक बारी जब पोजीशन कॉम्प्रोमाइज होगा उसके बाद शायद हमें ये एलिमिनेशन पॉइंट्स भी उठाते दिखाई देंगे। लेकिन आईएचसी रेडी नाउ, द डिफेंडिंग ग्लोबल चैंपियंस, वो कितनी जगह इस सर्कल के अंदर बनाएंगे। फिलहाल के लिए व्हीकल्स के अंदर हमें बेशतर टीमें दिखाई दे रही हैं। आईएचसी के भी प्लेयर व्हीकल्स के अंदर जा रहे हैं। फिलहाल के लिए रॉय बिल्कुल सामने मौजूद है, एंड वहीं पर रॉय के प्लेयर एक जो डिफरेंट एंगल पर मौजूद है, उनके ऊपर ग्रेनेड दागने की कोशिश की जाएगी, लेकिन शानदार तरीके से अभी फिलहाल के लिए बचते दिखाई दे रहे हैं टीम रॉय के खिलाड़ी। आईएचसी की क्रॉसेस है। बिल्कुल ठीक है आप, लेकिन आईएचसी दे हैव टू डू समथिंग। यहाँ पर ग्लोबल चैंपियनशिप की जो दावेदारी है वो एट स्टेक दिखाई देगी, एंड दिस इज द ग्लोबल चैंपियनशिप डिफेंडिंग टीम, जिनको अपना वो टाइटल, अपनी वो ट्रॉफी डिफेंड करना होगी। लेकिन फेज क्लान, उनको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है कि निग्मा गैलेक्सी की निकाला गया। फेज की तरफ से ग्रेनेड्स थे, क्या ग्रेनेड्स का ये सिलसिला, ये तबादला ख्याल, निग्मा गैलेक्सी उनका करेगा बुरा हाल। जाएंगे ग्रेनेड्स एक एक करके, और निग्मा गैलेक्सी क्या यहाँ पर बच पाएंगे या फिर उनका एलिमिनेशन ही देखने को मिलेगा। यूटिल्स मजीद डंप होते हैं, मेला स्टार्टर क्लोज इन करेंगे, स्मोक्स का के बादल यहाँ पर आ छटेंगे बादल। इससे पहले ही मोलोटोव्स का सिलसिला, और निग्मा गैलेक्सी डाउन टू द लास्ट प्लेयर। लेकिन सामने से ग्रेनेड्स आते हैं निग्मा गैलेक्सी के रऊफ की तरफ से, लेकिन रऊफ का खेल तमाम और क्या क्या बनाया यहाँ पर इस्लाम ने। इस वक्त मौत का जो एक मंजर है वो दिखाया यहाँ पर, लेकिन खैर ऑन दी अदर साइड आईएचसी देखते डाउन टू द लास्ट हो चुके हैं। आईएचसी की भी डोमिनेशन को फुल स्टॉप लगाया जाएगा। दिस टाइम अराउंड रॉय सिर्फ एक ही प्लेयर नॉक हुआ, सिर्फ एक ही प्लेयर नॉक कराया, और पूरा आईएचसी का स्क्वाड एलिमिनेट किया। दी व्हाट अ सरप्राइज फ्रॉम दिस टीम। लेकिन अब वर्सेस फेस प्लान है, और दोनों साइड्स पे 4-4 रेड सिचुएशन, बिकॉज़ रॉय की एक प्लेयर नॉकडाउन आ गई और वो अब रिवाइव हो चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल। थाईलैंड वर्सेस वियतनाम की ये जंग अब चल चुकी है। फेस प्लान फ्रॉम थाईलैंड एंड गिट्सो रॉय, जो कि वियतनाम रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, इस ग्लोबल चैंपियन दे रहे हैं। इक्वली एडवांटेज दोनों के पास मौजूद रहेगा, लेकिन ज्यादा एरिया कंट्रोल हमें फेस क्लैन के खिलाड़ियों की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन गेट्सो रॉय जिस तरह से उन्होंने आईएचसी का गेट कीप किया है, वी कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देयर साइड एज वेल। लेकिन अभी के लिए पहला नॉकआउट निकालना बहुत जरूरी है। पहला नॉकआउट जो भी टीम निकाल लेगी वो प्रेशर जरूर बनाएगी सामने रहती टीम के ऊपर, एंड फेस के ऑनजिन उनका पोजीशन अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया या गेट्सो रॉय के प्लेयर्स ने कर दिया, तो फिर ये चीज बहुत ज्यादा दिक्कतों में लेकर आएगी टीम फेस क्लैन के खिलाड़ियों को। फिलहाल के लिए व्हीकल्स लेकर अपने पोजीशंस को मजीद बेहतर किया जा रहा है। इस सर्कल के हिसाब से दोनों साइड्स के ऊपर हमें एक एक रिज दिखाई दे रही है, लेकिन उसके ये स्प्लिट इख्तियार कर लिया है। ऑनजिन का पोजीशन सबसे वाइटल, सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। व्हीकल लेकर आगे जाएंगे गेट्सो रॉय के प्लेयर, वापसी इख्तियार करने पर उन्हें मजबूर कर दिया जाएगा। स्काउट कर रहे हैं, लेकिन फेस के विंटोरेज अभी भी फिलहाल के लिए अपना पोजीशन कॉम्प्रोमाइज करना चाहते नहीं है। स्मोक्स के बादलों में अपना व्हीकल लगाया जाएगा। गेट्सो रॉय के प्लेयर घर की जानिब जो मौजूद थे, ब्लू जोन से लड़खड़ा रहे प्लेयर, उन्हीं को सबसे पहले पिक ऑफ किया जाएगा। बाकी भी 3 खिलाड़ी अब शायद बच ना पाएंगे, लेकिन फेस का ये स्प्लिट, इसको तोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होने वाला है गेट्सो रॉय के खिलाड़ियों के लिए। फिलहाल के लिए कोशिशें बहाल की जा रही हैं। गेट्सो रॉय जान मारते दिखाई दे रहे हैं। ग्रेनेड दागा जाता है, एक अच्छा ग्रेनेड है। पोजीशंस थोड़ी बहुत फेस क्लैन की भी कॉम्प्रोमाइज की गई है, लेकिन कोई भी आउटिंग जनरेट, ये मोलोटोव्स, ये ग्रेनेड्स फिलहाल के लिए फेस के लिए नहीं कर पाएंगे, गेट्सो रॉय के लिए नहीं कर पाएंगे। सामने से भी अब कुछ यूटिलिटीज दागे जा रहे हैं। गेट्सो रॉय के लिए तो इंतहाई मुश्किल बना दिया है फेस ने इस मैच का चिकन डिनर लेकर जाना। बिल्कुल ठीक है आपने, यहाँ पर चिकन डिनर लेकर जाना मुश्किल होता हुआ दिखाई दे जरूर रहा है अभी के लिए, लेकिन खैर इसके प्लेयर्स यहाँ पर स्पॉट किया गया उनकी तरफ से। डैमेज करने की काफी अच्छी कोशिश जरूर थी, नाकामयाबी का सामना करना पड़ेगा, फिर से कोशिश की जाएगी, एक बार फिर से नाकामयाबी। लेकिन फेस क्लैन दे आर गेटिंग दोस नॉकआउट्स, लास्ट वन स्टैंडिंग, आखिरी प्लेयर के ऊपर यहाँ पर बात आ चुकी है। आगे बढ़ेंगे रॉय के प्लेयर, लेकिन फेस दे हैव दिस डोमिनेशन इन देयर हैंड्स, और ये चिकन डिनर भी उन्हीं के पास जाएगा, और ज्यादा कुछ दूर नहीं फेस प्लान लेकर जाती है ये विनर चिकन डिनर, और अपनी वो दावेदारी साबित की तरफ से। जी हाँ बिल्कुल, एंड फेस क्लैन अपने चारों के चारों प्लेयर्स को एंड सर्कल में लेकर आने का फायदा ये होता है
एंड शानदार तरीके से प्लेयर सेलिब्रेट भी करते दिखाई दे रहे हैं। टीम फेस क्लैन फ्रॉम थाईलैंड अपनी जगह बनाती है टॉप स्पॉट्स में। वहीं पर दाद देना पड़ेगी गेट्सो रॉय को, बहुत बड़े बड़े नाम उन्होंने भी एलिमिनेट किए सर्कल में आते। IHC का जिस तरह से सर्कल गेट कीप किया गया बगैर अपना कोई प्लेयर गवाए, वो चीज बहुत काबिले दीद थी। हर टीम बहुत अच्छा खेल रही है। हमने निग्मा गैलेक्सी की परफॉर्मेंस हमने देखी, हमने गेट्सो रॉय की परफॉर्मेंस देखी, इसके अलावा हमने अगर IWNRX को देखे किस तरह से वो एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाए। फिर हमने IQ का TJB के ऊपर वो 1v3 देखा जो कि प्रॉपर 1v3 था, कितना बेहतरीन था यार वो। TJB जैसी टीम के ऊपर ऐसे सिचुएशन में जहां पर आपके तीन प्लेयर एलिमिनेट हो चुके हैं, you did a 1v3 and this is really impressive, इसको दाद देना पड़ेगी। लेकिन खैर he's on the other side, they played really well, काफी अच्छा खेला गया उनकी तरफ से भी और दाद उनको जरूर देंगे। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए, ये वो लास्ट मोमेंट था जहाँ पर मेला को देखा हमने आगे बढ़े, एक गाड़ी में थे। इस मोमेंट पे गाड़ी का इस्तेमाल करना ये समझ से बाहर होता है आदि। इस तरह के सिचुएशन में मेरे ख्याल से टीवी सिचुएशन में गाड़ी इस्तेमाल करना वाज द बिगेस्ट मिस्टेक जिसका पनिशमेंट मिलता है सामने से। और वो पनिशमेंट ऐसी हुई कि रॉय के हाथ चला गया। लेकिन इससे पहले रॉय की परफॉर्मेंस वाज रियली अप टू दैट मार्क, बहुत अच्छा खेला गया रॉय की तरफ से। लेकिन वन टीम who made sure कि वो सारी लॉबी को डोमिनेट करे, इट वाज टीम फेस। जी हाँ बिल्कुल, 8 एलिमिनेशंस 2 खिलाड़ियों के पास, कुल मिलाकर 10 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले गए हैं इस टीम की तरफ से। मोमन, मेला, विंटोरेस, क्या कमाल खेला गया है इन सारे के सारे खिलाड़ियों की तरफ से। ऑनजिन इतना कुछ कर नहीं पाते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट रोल किया, 207 का डैमेज है उनके पास। इसके अलावा कोई एलिमिनेशन पॉइंट या नॉकआउट अनफॉर्चुनेटली निकाल नहीं पाते हैं। सो डुओ डोमिनेशन आप कह सकते हैं जो फेस की तरफ से दिखाई गई, जिस तरह से पहले गेम में फलक और IQ ने बेड़ा उठाया था। लेकिन IWNRX अब ये फाइट आने वाले मैचेस के हिसाब से किस तरह से तब्दील होगी देखना बाकी है। नावी जिन्होंने बज़ाहिरी तौर के ऊपर इस मैच में वो ड्रॉप फ्लैश अबैंडन कर दिया, मिलिट्री बेस जाएंगे, मिलिट्री बेस जाएंगे। देखा आपने, ये बड़ा सवाल पूछा आपने, तो वो देना बहुत जरूरी है उनके लिए। एंड डेफिनेटली यहाँ पर तो हर टीम ही अवॉइड कर रही है कि ताकि कोई भी गलती उनकी तरफ से ना की जाए, यानी कि वो जो ड्रॉप क्लैशेस है उनको जितना ज्यादा से ज्यादा अवॉइड। जी बिल्कुल ठीक है आपने, वो साइड की तरफ से जहाँ पर वो ज्यादा ग्लाइड करने की कोशिश करे तो उनको पनिशमेंट मिली। दे हैव टू मेक श्योर कि वो इस तरह की कोई भी गुंजाइश ही ना छोड़े जिससे वाली नहीं पकड़ पाई है। IHC को भी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा लड़खड़ा है एंड पर आकर, जब सर्कल हासिल करने की बात आई शानदार तरीके से उन्होंने उससे पहले फाल्कन फोर्स को तो एलिमिनेट किया। लेकिन डाइवर्सिफाई बहुत ज्यादा हो चुका है कंपटीशन। अगर आप इस मैच में देखें टॉप परफॉर्मिंग नाम तो आपको बहुत सारे नाम दिखाई देंगे। फेस क्लैन तो है ही है, गेट्सो रॉय है, IWNRX है, इसके बाद निग्मा गैलेक्सी है। IHC ने भी थोड़े बहुत पॉइंट्स निकाले, लेकिन खैर 20 कुल पॉइंट्स फेस क्लैन अपने नाम करती है इस मैच से। एंड इसके अलावा गेट्सो रॉय उनकी साइड से 13 पॉइंट्स निकाले जाते हैं, निग्मा गैलेक्सी की साइड से 13 पॉइंट्स निकाले जाते हैं, IHC 8 पॉइंट्स लेकर जाती है, 6 पॉइंट्स फाल्कन्स, IWNRX 6 पॉइंट्स, INS 6 पॉइंट्स और 6 के 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स, अल्टर ईगो 6 के 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स। बिल्कुल ठीक है आपने, 6 के 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स अल्टर ईगो की तरफ से देखने को मिले हमें और काफी अच्छा खेला गया उनकी तरफ से। लेकिन वहीं पर अगले पेज की तरफ आएंगे जहाँ पर हमें दिखाई देता है कि टीम को इससे 5 पॉइंट्स लेकर जाती है, यहाँ पर 3 पॉइंट्स लेकर जाती है। उनकी तरफ से, लेकिन वहीं पर अगले पेज की तरफ आएंगे जहाँ पर हमें दिखाई देता है कि टीम को इससे 5 पॉइंट्स लेकर जाती है, यहाँ पर 3 पॉइंट्स लेकर जाती है। A6 side with 3 total points versus Pro with 3 points and ये वो टीम है जिन्होंने एवरेज पॉइंट्स निकाले।